Another class of hydrocarbons are the unsaturated hydrocarbons. We've already studied the saturated hydrocarbons, which include alkanes. These unsaturated hydrocarbons, as the name indicates, unsaturated means all the four valencies of carbon are not satisfied by single covalent bonds. So, these hydrocarbons are the carbon compounds which contain multiple bonds. Multiple bonds, as in they may have carbon-carbon double bond or they may have carbon-carbon triple bond. Right? So, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, दे आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. The compounds containing one or more carbon-carbon double bonds are referred to as alkenes, and the one containing carbon-carbon triple bonds are called alkynes. So we can say unsaturated hydrocarbons are of two types, alkenes as well as alkynes. Alkenes, we can give some examples of alkenes like the simplest alkene, ethene, CH2 double bond CH2. Although I'm writing it like this, but if I expand the structure, it will be hydrogen bonded by single covalent bonds, and the two carbon atoms are bonded by double covalent bonds. So because it contains one multiple bond, double bond, it is an unsaturated hydrocarbon. Another example of unsaturated hydrocarbon alkene may be CH3 CH double bond CH2. The general formula for alkenes, this is again very important, is CnH2n, where n is the number of carbon atoms. So we can make any alkene formula for any alkene using this general formula. For example, if I say एक ऐसा alkene बनाना है जिसमें let's say 5 carbon atoms हैं. So for this, the value of n becomes 5 and the formula becomes C5H10. Similarly, we can make an alkene maybe with 8 carbon atoms. So n की वैल्यू 8 हो जाती है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इट बिकम्स C8H16. Coming on to alkynes. Alkynes are also unsaturated hydrocarbons, but they contain carbon-carbon triple bond. So because we are increasing the number of multiple bonds, definitely number of hydrogen atoms will be less than the corresponding alkenes or alkenes. So for example, the simplest alkyne, which is called ethyne, the formula is CH triple bond CH. So it contains one triple bond, it falls in the category of alkynes. Similarly, propyne, that will be CH3C triple bond CH. The general formula for alkynes is CnH2n minus 2, where n is the number of carbon atoms. तो कोई भी alkyne का formula आप इससे बना सकते हो. Let's say an alkyne which contains 5 carbon atoms, so it will be C5, 2 into 5 minus 2. So that will make C5H8. Another example of alkyne may be the one which has, let's say, 9 carbon atoms. So n की value इसके लिए 9 हो जाएगी. Formula हो जाएगा C9H16. So these were the unsaturated hydrocarbons. Now let's see the classification of organic compounds. तो इसके लिए पहले एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन स्टडी करने के लिए. So organic compounds, they are basically what I've already defined it. They are hydrocarbons or their derivatives. So any compound containing carbon or hydrogen, that is a hydrocarbon, carbon and hydrogen in fact, वो तो include हो गई organic compounds की कैटेगरी में. उसके अलावा अगर कोई भी और compound हम किसी hydrocarbon से derive कर सकते हैं, उससे बना सकते हैं, तो वो compound भी organic compounds की कैटेगरी में fall करेगा. Organic compounds, they have been broadly classified into two categories. दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. ओपन चेन कंपाउंड्स, open chain, they are also called acyclic compounds or aliphatic compounds. So this is the first category of organic compounds, or open chain,
acyclic or aliphatic. The second category is closed chain compounds, also called cyclic compounds. Now, as the name suggests, open chain compounds which have straight or branch chains of carbon atom skeleton with appropriate number of hydrogen atoms and functional groups. So these compounds are the one which have open chain of carbon atoms. The chain can be either straight chain or it can be branch chain. And if we join the free ends of carbon chain, both the carbons at the corners, they are joined together by covalent bonds, then it converts into a closed chain or cyclic compound. बहुत easily इनमें हम differentiate कर सकते हैं. जैसे let's say butane, whose formula is C4H10. If I draw butane, it will be like CH3, CH2, CH2, CH3. You can count the number of carbon and hydrogen atoms. Now this is an open chain compound. क्यों? क्योंकि इसके जो दोनों ends हैं, carbon ends, वो free हैं. They are not joined together. So it is a straight chain open chain compound. इसी को ही मैं बना सकती थी इस तरीके से CH3, CH इस पर एक branch दे सकती थी CH3 की and further continuing with again a methyl group. तो ये भी C4H10 ही है, but in this case ये branched है. But still it is open chain. Why? Because जो corners हैं, जो free जो ends हैं चेन के, दे आर ओपन, राइट. अब अगर इन दो एंड्स को, या इस जैसे ये एग्जांपल है ब्यूटेन, इसमें अगर इन दो कार्बन एटम्स को मैं ज्वाइन कर दूं बाय कोवलेंट बॉन्ड्स, इट विल कन्वर्ट इनटू अ क्लोज्ड चेन और अ साइक्लिक कंपाउंड व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ऑब्वियसली फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि जब आप दोनों कार्बन एटम्स को ज्वाइन करोगे, आप एडिशनल बॉन्ड्स बनाओगे. एडिशनल बॉन्ड्स बनाने के लिए आपको कुछ हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे in order to satisfy only 4 valencies of carbon, right? तो इसके लिए हम अगर हम साइक्लिक बनाते हैं, हमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन एटम्स हमें कम करने पड़ेंगे. बट देन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड चेन और अ साइक्लिक कंपाउंड. देन फर्दर क्लासिफाइंग, अगर हम आगे और क्लासिफिकेशन कंटिन्यू करते हैं, तो ओपन चेन कंपाउंड्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड unsaturated. Right? Saturated aliphatic compounds and unsaturated aliphatic compounds, we've already studied them. Saturated include compounds containing all carbon-carbon single bonds and they are called alkanes. The general formula for them is CnH2n plus 2. Unsaturated further divided into two, alkenes and alkynes. Alkenes are the one which contain carbon-carbon double bond and alkynes contain carbon-carbon triple bond. General formula for alkenes is CnH2n and that for alkanes is CnH2n minus 2. This is a complete classification of open chain compounds. Moving on to the closed chain or cyclic compounds, they are further divided into two: alicyclic compounds and aromatic compounds. So closed chain compounds are of two types, alicyclic and aromatic. Alicyclic compounds basically, ये जो टर्म हमने दिया है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इस alicyclic वर्ड को. Ali and cyclic. Ali refers to aliphatic open chain and cyclic because it is included in the category of closed chain compounds. तो इन दोनों को अगर हम मीनिंग वाइज समझें तो साइक्लिक बिकॉज इट इज अ क्लोज चेन कंपाउंड, उसमें कोई रिंग स्ट्रक्चर होगा, कोई साइकिल का स्ट्रक्चर होगा. एंड एली रेफर्स टू एलिफैटिक. सो दीज आर दोज कंपाउंड्स विच आर साइक्लिक but in properties they resemble to the open chain or the aliphatic compounds. That is why they have been named as alicyclic compounds. तो जो मैंने अभी एग्जाम्पल कोट किया था ब्यूटेन का, दिस इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज एन एलिफैटिक कंपाउंड ब्यूटेन, पर इसको जब मैंने साइक्लिक में कन्वर्ट किया इट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, राइट. सो दिस इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड. Why? It is cyclic. It consists of a chain of 4 carbon atoms, but in properties, because it has all carbon-carbon single bonds, definitely it will resemble in properties to
saturated hydrocarbon, that is an open chain hydrocarbon. That is why it is an alicyclic compound. Further, alicyclic compounds को हम दो categories में divide कर सकते हैं, saturated and unsaturated. Saturated alicyclic compounds which will contain all carbon-carbon single bonds, like the previous example, right? And unsaturated which will contain at least one carbon-carbon multiple bond, that can be double bond or a triple bond, right? So if I change this compound to somewhat like this, कि मैं इसमें एक double bond introduce कर दूं, then it will become an unsaturated alicyclic compound. Aromatic compounds, the name aromatic, aroma, it has been derived from the term aroma, which means a characteristic smell, right? So the name aromatic has been derived from the Greek word aroma, that means a sweet smell, because most of the compounds of this category, they have pleasant smell. But बहुत बार हम स्मेल से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कंपाउंड को, तो वी शुड हैव सम अदर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, और वो है कि किसी भी कंपाउंड में, इट्स वेरी सिंपल, किसी भी कंपाउंड में अगर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग है तो हम उसे एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में इंक्लूड कर लेते हैं. नाउ व्हाट इज बेंजीन? फॉर्मूला फॉर बेंजीन इज C6H6 and its structure is, it consists of a hexagon. ये जो 6 कार्बन एटम्स हैं, they are joined together in the form of a hexagon, and there are alternate carbon-carbon double bonds. And if we satisfy all the 4 valencies of carbon, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा C6H6. दिस इज बेंजीन. इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू मेक 3 डबल बॉन्ड्स विच आर एट ऑल्टरनेट पोजीशंस, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं. This is also benzene, and that is why if we combine these two structures, हमें internally जो hexagon है उसके अंदर एक continuous ring structure मिल जाएगा, और इसीलिए बेंजीन को, this is the most common representation of benzene, एक hexagon बना देते हैं और अंदर एक circle बना देते हैं. The circle only represents कि there are 3 alternate double bonds which can have any position. उनके पास 2 ऑप्शन है, वो किसी भी पोजीशन में हो सकते हैं, एंड इनफैक्ट दे कीप ऑन रेजोनेटिंग, वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, इसलिए हम बीच में क्या बना देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं. सो दिस इज बेंजीन. किसी भी कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा बेंजीन रिंग है, then it is included in the category of aromatic compounds. So we can take some examples of aromatic compounds like आप बेंजीन का अगर एक हाइड्रोजन हटा के उस पे लगा देते हो NH2 ग्रुप, it becomes aniline. हाइड्रोजन हटा के हम लगा देते हैं मिथाइल ग्रुप, it becomes toluene. बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं हम by OH group, it becomes phenol. So all these are aromatic compounds as they have this benzene ring in them. So this was the classification of organic compounds, जिसमें हमने 2 बेसिक कैटेगरीज पढ़ी हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन. Open chain, they are saturated or they could be unsaturated also. Closed chain further divided into alicyclic and aromatic. Alicyclic भी saturated या unsaturated हो सकता है, obviously because alicyclic है, properties में aliphatic की तरह ही होंगे, तो classification भी वैसा ही है. And aromatic में बहुत सिंपल तरीके से अगर समझाया जाए तो किसी भी कंपाउंड में अगर बेंजीन रिंग है तो वो एरोमेटिक हो जाता है. ऑल्दो देयर आर अदर क्राइटेरिया ऑल्सो, जहां पर बेंजीन रिंग नहीं भी होती तो भी वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है, बट स्टिल इस लेवल पर या बहुत सिंपल तरीके से समझने के लिए एरोमेटिक विच हैव बेंजीन रिंग इन देम.